कि इंतहा इंतजार की कुछ इस कदर हुई कि वादा था शाम का और जिंदगी गुजर गई। लोग कहते हैं कि अब तुम मंजरी दिख नहीं रही हो और तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। सिंपल, गो टू द प्रोफाइल, ब्लॉक देम। खत्म बात। मुझे नहीं मिली पंजाबी फिल्म, आई वुड हैव लव्ड टू डू पंजाबी आल्सो। वाह, तो की हाल है तो उनको आंसर मिलता होता खूब चांद। Powerful men in the industry do try to take advantage of their position of power. आई थिंक 2018 में यू रोट ए ओपन लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। Nobody rapes anybody in the industry. दीपिका पादुकोण ने ये एक बताया था कि भाई 8 आवर शिफ्ट। Like, you know, it's accepted like a norm and Norm. like, you know, whatever. It is a male dominated industry. रिसेंटली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वेयर शिफाली जरीवाला शी पास्ड अवे। There's definitely pressure of looking perfect. एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली डॉग बाइट इंसिडेंट्स इतने सारे ये लोग रिपोर्ट करते हैं, आई विश वो एक डॉग का इंटरव्यू ले पाते और वो बता पाता कि ऐसा क्या हुआ, क्यों उसने किसी इंसान को बाइट किया। सो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है, कॉमेडी और इमोशनल? बिकॉज इमोशनल में आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, दैट आई नो। कि अब अगर इतना ही अंधेरे हैं तो क्या ये जो चमकते हुए जो अवार्ड्स हैं क्या ये खरीदे जाते हैं? या ऐसे कुछ टैलेंट? नमस्कार, स्वागत है आपका सितारों के सफर में। और आज के सफर में हमारे मेहमान के साथ हम करने वाले हैं ढेर सारी ग्रैंड मस्ती, और लोग भी उन्हें इतना चाहते हैं कि वो भी कंफ्यूज हैं कि किस किस को प्यार करूं। तो रोक सको तो रोक लो। चलिए मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं, उनका एड्रेस बता देता हूं। उनका एड्रेस है बड़ौद हाउस, पुणे हाईवे। तो सर मंगल सावधान, लेट्स वेलकम वन एंड ओनली, ऑलवेज स्माइलिंग, मंजरी फडनेस। Thank you Welcome so to the much show, for ma'am. having me and what a sweet introduction. Thank you. So I tried, कि मैं आपका प्रोफाइल आपके इंट्रो में, I tried my best. Brilliant. Thank you so much. So Manjari, it's good to have you here, and your smile is really infectious, and that is what you. If somebody asks me कैसे describe करना है, कौन है मंजरी, मैं कहूँगा जो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है ना, वही है मंजरी। Wow. Thank you so much. वेलकम। तो अब ये बताइए कि आपने हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, बंगाली इतनी मूवीज में काम किया है, तो ये कैसे कर लेते हैं? मराठी भी, हाँ। मराठी, या वो तो ऑब्वियस है एक्चुअली। सो हैव यू लर्न ऑल दोस लैंग्वेजेस? तो मुझे लैंग्वेजेस लर्न करने में बहुत मज़ा आता है। आई मीन आई रियली एंजॉय लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, मराठी तो मेरी मदर टंग है, तो वो तो मैं जानती ही हूँ। इंग्लिश ऑफ कोर्स स्कूल में ऑल माई लाइफ, फ्रेंच आई हैव लर्नड, बट तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम आई डिड नॉट नो जब मैंने फिल्में की थी। बंगाली वॉज मोर ईजी फॉर मी टू ग्रास्प, बट मुझे बड़ा मज़ा आया व्हेन आई डिड तेलुगु फिल्म्स एंड ऑल। मैंने 4 तेलुगु फिल्म्स की थी, तो आई थिंक अगर मैं 5वीं करती, आई थिंक आई वुड हैव बीन रेडी टू डब। सो एंड लाइक स्कूल में संस्कृत सीखा था, संस्कृत is almost there in every language. So उसके बहुत सारे pronunciations मैं समझ जाती थी, and so it was very easy for me to learn my lines also. So I really enjoyed the process of it. That's amazing because that shows your intellect, because it's not easy कि आप खुद की भाषा लोग आजकल नहीं बोल पा रहे हैं, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, that's really great. तो ये बताइए, अगर हम साउथ की बात करते हैं, जैसे आजकल तो पीपल आर मूविंग टुवर्ड साउथ, एंड बॉलीवुड के लोग, अगर आई कैन कॉल दैट, बॉलीवुड के लोग जा रहे हैं साउथ में उनके डायरेक्टर्स और उनके एक्टर्स के साथ काम करने। बट वो भी एक दौर था जब ऐसा कहा जाता था कि अरे इनको तो यहाँ पे काम ही नहीं मिल रहा है और इसीलिए साउथ की मूवी कर रही हैं। तो आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा कभी? Not really, because मैं in fact when I was doing my South films, मैं वेट करी थी, instead of doing any wrong film in हिंदी, मैं वेट करी थी एक अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिंदी में। So meanwhile I decided कि why not let me explore South? I'll gain experience, and I think acting should not have a barrier of languages. So I was like, I don't know if I'll be able to do it, but मैं जब गई तो मुझे वहाँ के लोग भी बहुत पसंद आए, मुझे काम करने में मज़ा भी बहुत आया। So नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये काम नहीं है तो साउथ फिल्म करना है। Rather, it gave me a chance to wait for the right projects in Hindi while I was enjoying myself and gaining experience, growing as an actor.
in South. So तो I saw it like that. तो पंजाबियों ने आपका क्या बिगाड़ा था? मुझे नहीं मिली पंजाबी फिल्म. I would have loved to do Punjabi also. चलिए मे बी इन फ्यूचर बिकॉज यू नो आपका जो पंजाबी आर नोन फॉर देयर एनर्जी, Yeah. सो द एनर्जी व्हिच यू हैव, तो मुझे लगा कि यार मतलब पंजाबी भी होनी चाहिए. यार मुझे बहुत लोग बोलते थे कि एकदम लाइक एवरीवन हु डजंट नो आई एम महाराष्ट्रन, एक्चुअली नाउ एवरीवन नोज आई एम महाराष्ट्रन, बट जिनको नहीं पता होता है वो जनरली सोचते हैं कि मे बी आई एम पंजाबी. Yeah. बिकॉज माय डैड वाज इन द आर्मी, तो हम लोग नॉर्थ में ज्यादा रहे हैं. तो यू नो शिमला, जम्मू, दिल्ली, सो वो एक थोड़ा सा फ्लेवर नेचुरली आ गया है along with you being a Maharashtrian. So yeah. Yeah, wow. तो की हाल है तो उनको आंसर मिलता होता खूब चांद, तब उनको शौक लगता होगा. एनीवेज, तो अभी देखिए हाल ही में दीपिका पादुकोण ने ये एक बताया था कि भाई 8 आवर शिफ्ट की कंडीशन पे कि भाई, और काफी हंगामा हो गया कि भाई मेल एक्टर्स तो आप लिबर्टी देते हैं, व्हाट अबाउट फीमेल्स. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, और क्या ये डिस्क्रिमिनेशन कुछ इस तरह का है या ठीक है? ऑनेस्टली बोलूं तो डिस्क्रिमिनेशन तो है. आई थिंक ये सभी लोग जानते हैं. It is a male dominated industry. Like even if a male actor, a male star will come late on set or anything, it is like, you know, it's accepted like a norm and like, you know, whatever. But the moment the actresses, like, you know, sometimes अगर किसी reason से या whatever थोड़ा late हो गए तो थोड़ा सा हो जाते हैं को tantrums हैं, या oh she's asking for only 8 hours of shift, like it becomes like like, you know, she's throwing tantrums and throwing her weight around, but that's not the case. I think it's fair. I don't think it's wrong. Because let's not forget one thing. जब हम लोग set पे जाते हैं, अगर 8 hour की shift है, especially the female actors, वो anyway 2 घंटे पहले आती है. Absolutely. To get ready with hair and makeup. तो anyway 10 hours हो जाता है. Right. Now, like I'll give you an example of my experience when I was new in the industry. Like right now you talked about Deepika Padukone asking for an 8 hour shift, right? So now she is at a position of power where she can demand it. Absolutely. But when it comes to like, you know, the other actors and all that stuff, and especially when you're new in the industry, they try to take advantage of the fact that, like, you know, abhi like she will work जितने भी घंटे उसको बोलो. लाइक जब मैं नई थी इंडस्ट्री में, जब मैं साउथ में पहली फिल्म कर रही थी, आई हैव लिटरली वर्कड फॉर 22 hours for 15 days at a stretch. So they were literally doing 2 shifts a day. Like, you know, I mean, I would wake up in the morning at 4 o'clock, get ready at 5 o'clock, leave for sets, reach set at 6 o'clock, finish the first half of the day till 6 p.m. Okay, and then immediately get ready for the night shoot, which was a song shoot, and then we will shoot till 2 o'clock, and then we would leave the set. The hotel was like an hour away, and फिर मुझे बस 1 घंटे की नींद मिलती थी. तो but मैं नहीं थी. I had a point to prove. I'm a hardworking girl. I did not want to complain. I was like, I will do it. I can do it. You know, I kept pushing myself. I was very young, so I tried doing it for 15 days, but then naturally we are human beings. There's a body, you know, you kind of, I was giving like my body was giving up, and like you have to look fresh also on camera. Right. So अगर डार्क सर्कल्स दिखते हैं तो फिर लोग ये नहीं बोलेंगे कि बेचारी को रेस्ट नहीं दिया. Right. They will say कि oh she's not looking nice. So yeah, I mean, there was a time, I mean, that time I kind of had to put my foot down after 15 days, but yeah, I have in my career so many times worked for 16 hours, because 12 hour shift बोल के कभी अगर कोई सीन नहीं खत्म हुआ तो वो थोड़ा एक्सटेंशन हो ही जाता है. We as actors naturally we kind of understand. We sometimes understand. We like ठीक है, अगर 1 घंटा अगर डिले हो रहा है कि कोई बात नहीं, सीन खत्म कर लेते हैं. We don't wanna, we're in that moment and everything. So बट इंतजार इज मोर पेनफुल. हाँ. कि भाई अगर मेल एक्टर लेट आ रहे हैं जैसे आपने कहा और उनका शिफ्ट भी फिक्स है, दैट इज समथिंग. But see, there are a lot of people who are very punctual, who are very, very professional, but there are people who are not. But like when you talk about discrimination, उनको नहीं बोला जाएगा. They will not try to burn bridges with them. The moment a woman makes a mistake, or not mistake, if puts her foot down, asks for something reasonable, Right. it's kind of, unfortunately, It looks like a male-dominated industry, but I think things are changing. Things are rapidly. definitely Yeah. changing. So it is a Yes. better world now. So I think so during those hours of waiting, कि जब male actor लेट आ रहे हैं, तो have you picked up some hobby
कुछ लिखना या कुछ So luckily in my career till now, I don't remember any of my male actors coming late. So I don't remember waiting for except तो once. यू आर लकी, तो Except मतलब दे वर once. ऑलवेज लुकिंग Except फॉरवर्ड टू once. सी यू बेसिकली. I wish. That's amazing. I'm a poet, so I wrote it once, with this situation when you were talking, and I was thinking कि इंतहा इंतजार की कुछ इस कदर हुई कि वादा था शाम का और जिंदगी गुजर गई. तो कई बार इट्स अ लॉन्ग वेट, बट ग्रेट. आई थिंक यू आर फॉर्चुनेट. अब दैट रिमाइंड्स मी, एक बार आपने कहा था कि जाने तू या जाने ना के बाद कि लोग कहते हैं कि अब तुम मंजरी दिख नहीं रही हो और तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे. तो वो आपने कैसे हैंडल किया एंड हाउ डिड यू बाउंस बैक, बिकॉज वंस यू डिमिनिश, वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. तो हाउ डिड इट affect you and how did See, you? I did not want to sign films that weren't giving me the respect as an actor. मुझे जाने तो ये जाने ना के बाद, I was expecting कि मुझे I'll get bigger, better roles in big films and because I got a lot of appreciation. I know of big directors who appreciated my work and told me about it, but मुझे वो opportunities नहीं मिल रही थी, and I would rather wait than sign something like मुझे बहुत 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 छोटे छोटे सपोर्टिंग में बट नॉट वेरी एक्साइटिंग रोल्स में, they were relevance नहीं है. हाँ? Relevance नहीं है रोल का या Yeah, so I was like, no, I deserve better. Yeah. And I'd rather wait. I mean, I wanted to respect myself as an actor, and I waited for the right roles to come my way. चाहे वो कम आए, लेकिन जब I have been able to give it justice, and so I waited. Basically, I waited while, as I said, मैंने South films की उस time. Yeah. I'm a very creative soul. So for me, what was important was कि मैं continuously काम करती रहूँ, something creative करती रहूँ, तो मैं generally खुश रहती हूँ. Absolutely. Because for me, it's like creativity gives me the happiness. Creativity is my soul. So I have to do something that makes me happy. So I would go for singing classes, dancing classes. I was upping my skills. So मैंने वो time उसमें spend किया. Yeah, I think for our viewers, it is a great motivation. The reason being, many times when you want something and it is not happening, it is quite discouraging also. But if you can utilize that time like you did, and that is how it is reflecting on your face. It's a compliment actually. Thank you. When you are happy within, that is how it reflects on your face. So you chose not to sulk or complain, but you tried to diversify and did many other things. So that's amazing. So that really. Thank you. But coming back to the comments, now एक national time pass हो चुका है इंडिया में, स्पेशली पीपल दे टेंड टू ट्रोल. कोई काम नहीं है, कमेंट ही करना है. तो हाउ डू यू डील विद दैट? Simple. Go to the profile, block them. Khatam baat. Matlab, I just feel some people, okay, I don't know a single successful person who's happy in his or her life, has the time to put any stupid troll or any stupid message putting the other person down to feel better about his own life. It's only the people who are not happy with where they are and are trying to find reasons and खामियां किसी और की life में कि अच्छा ये ऐसा है तो मैं so they get this pleasure of trying to put other people down to feel that importance in their own lives. So I don't encourage it. So या तो मैं सिंपल है डिलीट कर देती हूँ, उनके मैसेजेस डिलीट कर देती हूँ, और मुझे थोड़ा इरिटेट होता है एक सेकंड के लिए, बट देन I kind of feel empathetic towards them, like बेचारे they're not doing too well. So yeah, I think that's all. Very better job. तो आपने काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम मूवीज़ किए हैं, मैसी मूवीज़ भी कर चुकी हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में प्रेटी फेसेस उनको टाइपकास्ट किया जाता है? हाँ, I think typecasting तो always happens. Like अगर for example, I'll talk about how I was typecast at the beginning of my career because I look a certain way. जैसे मैं अगर डायरेक्टर होता तो मैं आपको कभी पुलिस वुमेन वाला रोल नहीं देता, क्योंकि यार मतलब ठीक है अरेस्ट कर लो, मतलब too good. Like that, a lot of beautiful women have played inspector. But you have a lot of innocence actually. That is what I mean. But that's what. Okay, now I'm coming to that. So typecasting, when so when you look at me, as you said, you think I look innocent. I'm not, but I have your horoscope. Don't forget. We'll talk about it. So I look innocent, but I'm an actor. Now, when I go to meet somebody, like I've come to meet you here, I'm talking to you here, I'll be myself. Absolutely. I'm not going to play a character. I won't be seductive, or I'm not going to be like, being strict or something. But the beauty of being an actor
is to be able to transform who you are into a completely different person. That is the reason why you become an actor. That's what is the fun about it. So yeah, in the beginning, I'm like, you know, the way I looked, people just thought ki like, oh, she's sweet girl next door, isko girlfriend, wife, nothing. There was no meat. There was no meat in the characters. It was just, I was just there. I was just whatever, you know, but I was not enjoying that process very much. So वो typecasting मुझे बहुत irritate कर रही थी. Which is why I took a little break in between 2017 and no, yeah, 2017 to 2019. I kind of decided कि नहीं भाई, मैं wait करूँगी till something good and something more layered comes my way. Yes. So I waited for 2 years while I did theatre. And you know, to again up my skills. Whenever I'm waiting, I'm not waiting. I'm not sitting and doing nothing. I am doing something constructive with my time where I'm upping my skills as an actor or as a singer or whatever. So I did theatre at that point of time, and I did such beautiful 2 plays. I played Chandramukhi and Devdas. And it was from the point of view of Chandramukhi, that play which I did, full Broadway style and everything. And then there was another play called Double Deal Reloaded, which was again a very layered character. Just 2 characters on the stage, 80 minutes, and very different role, you know. So मुझे उस पे काम करने में बड़ा मजा आया. And then when Barot House came my way, that's when the industry's perspective about me changed. So I have tried to show the industry different characters, and every time I've done it, they've appreciated it. But generally that perception stays कि so after पहले वो रहा मेरा टाइप कास्टिंग की स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर. एक बार बारो टास्क कर ली ना, दे लव्ड माय इंटेंस परफॉर्मेंस. उसके बाद मुझे सेम ऐसे वाले रोल्स मिल रहे हैं, वैसे मेरे बच्चे मर रहे हैं, समथिंग और द अदर इज हैपनिंग, आई एम क्राइंग, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ, व्हिच इज ग्रेट. I really enjoy performing, but I would love to do something light-hearted. So I have always proved that I mean, like, I've always tried to prove the industry that don't try to limit me. Like, I'm beyond the limitations that are put on me. So, and I really hope at some point in life, people realize कि Manjari को कोई भी role दे दो, she will just transform into that character like a fish. So, you know, so I just hope that happens someday. Brilliant. और सुनाइए. Just You know, I'm mesmerized actually. You know, because कहते हैं कि either you can be beautiful or wise, and you are blessed with both. thank So you. that's amazing, you know, the way you have channelized yourself, the way, you know, you try to find opportunities even in adverse situation. That's really brilliant. Thank you. Now coming to another serious situation, which is popularly known as casting couch. Okay. और बहुत खबरें आती रहती हैं, यूँ कुछ रूमर्स हैं, कुछ ह्यूमर्स हैं, whatever you call it. और उसी वजह से इंडिया में एक हैशटैग ये मी टू मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था. जी. तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट इट एंड टेक ऑन इट? Powerful men in the industry do try to take advantage of their position of power. It's unfortunate, but not all. सब नहीं, सब बुरे नहीं हैं. अगर सब बुरे होते तो मैं टिकती नहीं इंडस्ट्री में अभी तक. But and I have also experienced like some really big, let's say, sharks in the industry who have tried to make those indecent proposals to me, where if I had accepted, my career could have gone another direction. Like, I could have been really somewhere else today. But I chose not to do it. I chose not to be exploited. So yeah, I mean, like, I don't regret it because it was a choice I made. शायद काम कम रहा है, but respectfully मिला है जो भी काम मिला है. और बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं इंडस्ट्री में. So it's a double-edged sword. Sometimes, like, if you have to have talent, you have to. I think it's bad on the men's part, where, like, you know, you're trying to hold that position and keep the position away from a talented person. You know, unless she gives in. So it's very unfortunate, but it happens. But again, I'm saying not everybody is like that. There are some amazing people in the industry. There are a few handful of people who will try to take advantage, or and they'll be very smart about it. They will try to gauge whether you know, they can patao you or not, or whether they can, you know, like, very sophisticatedly. So you can't implicate them either. So, but after this Me Too movement, do you feel that it is all over, or still there's you know, walls of silence?
ways have changed. Like now it's different. It's like nobody asks. See, nobody rapes anybody in the industry. Right. It's done, as I said, it's done very sophisticatedly. It is done very sophisticatedly where they will try to gauge, first of all, your personality, whether you are somebody who would give in or you won't give in. Vulnerable. Yeah, vulnerable. And I don't judge the women because, like, sometimes they come from very far away, fighting with their families, just trying to survive in Mumbai, and, you know, and they unfortunately sometimes take steps which they don't want to take. Right. So I have no judgment for anybody who takes whatever steps they want in their lives. But yeah, I mean, corruption happens everywhere, all over, all industries. So yeah. Absolutely. You know, astrologically speaking, we call Mumbai as Maya Nagari. Huh. And this business of movies is all about Rahu, which is illusion. Huh. Because if you do well in 2-3 movies, you become superstar. And Yeah. what if your 3 movies are not doing well? Then you are done. Yeah. So that is how it is. So a lot of unpredictability and a lot of uncertainty. And then, as you said, you know, you have your expenses, you have to maintain your lifestyle and Yes. everything. So, and your ambition too, you know, Yeah. that you have the promise which you have made to people, family, Yeah. or yourself. Yeah. So that is how I think those few which you said they tend to exploit, and that's really Yeah. sad. But I'm sure things are changing. You know, it's after Me Too and women empowerment, a lot of things Yeah. have changed, and people have understood, realized, and they have a lot of fear now Yes. in taking further, you know, this thing. So that's amazing. So, but do you feel कि talent ये इंडस्ट्री में टैलेंट है या फिर आपका पीआर और सोशल मीडिया का जो नंबर है, सो कॉल्ड, यू नो, फॉलोइंग, that is more important, and how do you handle it? Because unfortunately, I was doing a show on Z News, and it went on for 9 years, from 2005 to 2014. Yeah. I did 2,740 episodes. Huh. So, but unfortunately, there was no social media at that time. Nahi to I would have gone, Yeah. you know, maybe 10 million at that time, because I was the only one visible on the television. Right. So this is what happens, and you also started your journey a little bit at that time. So how do you deal with that? PR is a very important part of the business. As you said, no, आपने थोड़ी देर पहले बोला था जो दिखता है वो बिकता है. Yeah. So PR is a very important part of the business. The parents have an experience of how the industry works, so it's an advantage they have. So they have an entire machinery working for them. Even before any work of theirs comes out in the open, they've become stars already. Right. So that's the PR machinery working. Whereas talent is extremely important because not every one of them is accepted by the audience. True. But You talent can't impose. need- You can't yeah. impose, right? If you have talent only, you will survive for long. Yeah, then if you have talent, you'll survive for Yeah, long. yeah. But it is great when a PR can back the talent. I think पुराने ज़माने में वो सब paid media नहीं होता था. Journalists genuinely, when they liked an artist, when they thought somebody has talent, वो उनको उठाते थे. Yes. वो अब नहीं है. Now everything is paid for, and not everybody has the bandwidth to pay so much because PR is also very expensive. True. Not everybody can shell out like so many lakhs of rupees per month. Uncertain profession like that, especially when they're starting out, and especially when when they don't have the guidance, because like people like me, outsiders in the industry, when they come, they don't have the right guidance. They don't have anybody telling them what to do, what steps to take. So yeah, that kind of becomes a little bit of we stay on the back foot a little bit because of that, because of no powerful person backing you. Talking about you coming from outside the industry, and so there's a term to it is called nepotism. हाँ. So have you ever faced कि कभी कुछ लगा कि यार because of this कि मैं फैमिली से नहीं और आपका रोल किसी और को अलर्ट हो गया, साइन हो गया? Most of the time the casting happen on the big table where the producer director अपने आपस में decide कर लेते कौन होने वाला है cast में, and then like most of the times they try to cast the people they are comfortable with, they are used to working with, or they know of. So that's always an advantage that they have, but I don't want to blame anybody for that, because to be born in a film family is great. That's their privilege. That's their advantage. We have to struggle a little more, which is okay. And that's how life is sometimes unfair. You just have to deal with it. You just have to keep going. Recently, एक बहुत ही unfortunate incident हुआ where शिफाली जरीवाला she passed away. और फिर बहुत सारी बातें हुई कि ये सप्लीमेंट्स और ये सब उसकी वजह से या whatever. So do you feel that there's a lot of pressure to look fair and look beautiful in the industry to survive?
there's definitely pressure of looking perfect in the industry. But having said that, I think the generation today is appreciating naturalness a lot more. Because of social media, सब पता चल ही जाता है. Audience really now they crave to see natural people. So it's really unfortunate what happened with Shefali, but I think that's also personal choice how you want to grow. So that means if people are changing and they're accepting more naturality in a person, तो क्या ये plastic surgery वाली industry को खतरा हो गया है? नहीं, Or people are नहीं, वो तो it's on the rise right now. Like you don't have to be only an actor to get fillers done and to get the other procedures done, because even like regular people are getting it done. But I think it's a personal choice. Whoever wants to do whatever, it's their face, their body, do whatever you want. So I don't want to judge anyone on that. Right. But yeah, but it's very scary. I mean, like it's scary. मैंने खुद को नहीं पहचाना. Mother is like that. I mean, like some people do a really good job. Like there's some actresses who look stunning. They've done minimal jobs. It's looking great. So I think also what happens is, especially for actors, they are in front of the camera. Sometimes they also do it to enhance how they're looking on camera. Sometimes it just goes, it backfires. Some things backfire, but some things really help. How you are perceived and looked on screen. I mean, how you're looking on screen. So. Absolutely. Another thing about industry is about the payment model. And I've heard a lot about कि male get paid timely and Yes. females and बेचारे जो बाकी लोग जो crew members होते हैं, they don't get paid actually on time. And it's not about small budget movies. It's all about even big budget movies. Yeah, not all production houses, but yes, some people kind of really delay payments and literally delay by one year. अच्छा, एक और साइड है जिसमें जैसे कि मेल एक्टर्स दे हैव ए लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन एडिटिंग, और कई बार इनसिक्योरिटी की वजह से जैसे बहुत सारे ऐसे रूमर्स आते थे राजेश खन्ना जी और इवन अमिताभ बच्चन दे आर वर्किंग एंड भाई इसके सीन कम कर दो, वो ज़्यादा हीरो लग रहा है. दैट तो इज स्टिल इट इज ऑन. एंड हैव यू एवर फेस समथिंग लाइक दैट? So I have never sat on the edit table, so I have never seen it happen. बट व्हाटएवर यू हैव शॉट, आपके डायलॉग्स, आपके सीक्वेंस गाने, और पता चला वो रिलीज में आया ही नहीं. Sometimes कुछ scenes कभी कट जाते हैं because of the length of the film. Like I remember in जाने तो ये जाने ना, मेरे कुछ scenes कटने वाले थे. And अगर वो कट जाते, Meghna would have been like a nobody in the film. So I still remember. So and also there was one scene in the film which got cut later at the edit table, and I was thanking God so much for that. A little later, the film was getting a little long, and बाद में मुझे very reluctantly they kind of made me like had a word with me like, Manjari, you'll feel really bad, but these scenes are going to be getting cut. Which were those scenes? The scenes where after the party, after leaving Jiggy's party, when Imran and I are going back and it's raining, and I say, what's this? And then scooter and that, like, all that happens. So till there it was there. But that entire chunk where I was confessing to Imran that it's not like I don't know that my parents are not happy. But that was my defense mechanism, whatever. Jo bhi मेरा dialogue hai, that was a very crucial dialogue in the film. Where you understand the depth of Meghna, that she's not stupid. She knows exactly what's going on, but that's something she's doing to make her life more bearable, and that scene was going to go. And my heart sank. I was like, oh my God, my role will just be reduced to nothing if this scene is not there. And then I think 2-3 edits later, I think they all sat on the table and they took a decision, no, this scene has to come back because we're missing Meghna, we're missing her, missing Meghna full circle in the film. So they put it back. So मैं बच गई. Thank God. But I mean, that's a good thing. I mean, like they put it back because it was working for the film. So what I'm trying to say is, your question, some scenes sometimes get cut because of the length of the film or if it's not working. ऐमें ही एक बात कर लेते हैं. बॉलीवुड को कि ऐसी चीज़ जो कोई नहीं जानता और लोगों को जाननी चाहिए.
Like at the end of the day, inside everybody's struggling. At whatever level you reach in your life professionally, I think the struggle is constant. It's always there. It just changes forms. So वो दिखता नहीं है वो glamour में वो like all the razzle dazzle, you don't see it, but behind it's a very difficult, emotionally it's a very very difficult industry to be in. It reminds me of one my poetry. You know, stars shine in the dark background. तो हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे. I want to become a star. तो हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे. न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे. Beautiful, beautiful, that's amazing. Thank you. So you said that. Okay, great. तो ये बताइए कि अब अगर इतना ही अंधेरे हैं तो क्या ये जो चमकते हुए जो अवार्ड्स हैं क्या ये खरीदे जाते हैं? या ऐसे टैलेंट जैसा कुछ? नहीं देखो टैलेंटेड लोग बहुत है, बहुत बार टैलेंटेड लोगों को भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, बट येस देयर आर लॉट ऑफ अवार्ड्स दैट आर नॉट ऑथेंटिक. आई थिंक ये पूरी इंडस्ट्री जानती है, आजकल लोग भी जानते हैं, सो ये कुछ छुपा हुआ नहीं है, बट या आई मीन लाइक नॉट ऑल अवार्ड्स आर ऑथेंटिक, नॉट ऑल, सम आर बट नॉट ऑल. कि भाई आप आ रहे हैं, बोले क्या मिलेगा, बोले अवार्ड. सो क्या डू यू बिलीव इन, चलो हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट एंड आर यू डीपली इन लव विद समबडी और यू आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स दैट एंड I have done that share in life. I'm very scared of love now. but still you still open to find a partner and I would love to. I would love to find a partner. I'm very scared of marriage. Honestly, I'm very scared of marriage now. But I would be very happy to find a partner. I can, you know, spend the rest of my life. But I'm not commitment phobic. But I'm marriage phobic. but no, I don't fall very easily in love. so looking for intellect, you're looking for wisdom, you're looking for care, you know, what kind of test you want to take? The people who are watching, Kindness. kindness. I need somebody to be kind. I need a man who's man enough to allow, not thinking he's allowing, but like, you know, I mean, to let his woman fly without feeling insecure about. So you're not that romantic type, madam. You're judging a person, you know, you want. I'm extremely romantic. I'm extremely romantic. But मतलब ऐसा वाला कि मैंने एक बार लिखा था, वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह. oh, beautiful. But no, I am very romantic at heart, and I think maybe that's why, like, you know, all these romantic films have spoiled me. So because of that, I've never found the right person in my life. Because जो फिल्मों में होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता है. Yeah. So what red flag should a woman not ignore in a relationship? Oh, I have a PhD on red flags. I have a full PhD on red flags. Because like I've dealt with so many red flags people, but you know, when you're in love with somebody, you tend to ignore instincts. You tend to give it a benefit of doubt, which I've done so many times in my life in the past. But you know, sometimes your body, your mind, your soul is screaming and telling you those instincts, don't ignore it. So I've learned it the hard way, but I no longer give anyone benefit of doubt. I see the person for what he's showing himself to be. Taking it or making it more complicated. एक तो man cannot tell you what to do and what to wear, and that's the first sign of trying to control somebody. Oh, another red flag, huge red flag. Too much love bombing. Okay. Too much love bombing, na? Like, you know, that is very dangerous because, you know, that What does is not that? last. Love bombing? Love bombing is when somebody is constantly showering attention and gifts and love and so much of, Like becoming obsessive. yeah, like obviously like obsessed, but not no, love bombing is not obsessive. It's just basically एक इंसान को इतना चढ़ा देना कि like, you know, कि उसके बिना कुछ है ही नहीं लाइफ में, you know, because that doesn't last very long. And I've experienced this whole love bombing thing is very dangerous because it gives that kick, that high. It's like a drug, you know. And then there are people who kind of suddenly show the other side and kind of disappear or whatever.
मैं ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ That is But more love bombing- shattering. Yeah, I understand. love bombing is a Somebody is big red pretending flag. to be amazing, wow, 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 and Yeah. in reality he's not, you know, and Yeah, and yeah. someday he behaves in a different Anything that's too good to be true way. True, yeah. Hmm. probably is too Yeah. good to be true. Oh, It that's might right, probably right. is not true. So Right. yeah. So now that reminds me एक true incident के बारे में कि I think 2018 में you wrote a open letter to the Prime Minister Narendra Modi ji, and you had asked about you know strict punishment for the Yes. rapists, you know. Yes. So actors generally, you know, they try to shy away and they don't comment on those serious stuff. Yeah. उनको अपनी image और वो सब goody goody, you know, that is how they want Well to take. But researched, that I was can a bold thing which you did. So Like it came very impulsively. It came very instinctively. I couldn't hold myself back that time. यही कि मतलब you said something like that. तो Yeah. have you got any pressure और कभी कि भाई कोई डर या कुछ कि you know मैंने openly I said No, that. I never felt scared because the way I wrote, it was not putting anybody down. I never put the You government keep down. on actually commenting on all social causes basically. Yeah, I do that. Yeah, you're known for that. But social causes that I very strongly feel about. Like in this particular case, I was very, very strongly of that opinion that something really strict and strong laws have to come because they've been talked about over generations, but nothing had happened. What are they waiting for? Like, you know, and so many cases have happened after that. So I was in that whole phase where I was like, because at the end of the day, the longer route is going to be change of mindset of the male children. And like children actually learn from what they see in the house. And for that, I mean, they see how the father is treating the mother. They learn from they learn visually, right? बोल के उनको नहीं सिखाया जा सकता वो जो देखते हैं वो ही सीखते हैं. So whether the father is respecting the women in the family or not. If they do, then they learn respect. If they are insulting the women in the family or abusing the women in the family, they learn that behavior. So, so ek to education has to be there where children have to be taught, male children have to be taught how to respect the women in their lives, in their family. But uske pehle the conditioning has to happen from the family. But वो एक लंबा process है. उसके पहले for people, for men to be careful, like they have to have stronger laws so that they are so scared of the consequences of what can happen to them if they kind of commit a heinous crime Absolutely. like that, which is why those strong laws are important. Okay, so talking about other aspects of you being vocal and more about social causes, you're also a great animal lover, you know, and that's something which is amazing because आप उन लोगों की ज़ुबान बन रही हैं जो बेज़ुबान है एंड अभी एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था कि भाई जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको शेल्टर में डाल दिया जाए बाद में वो रिवर्स हो गया डिसीजन लेकिन अगर आप देखिए यू नो ये स्टोरी दोनों साइड की है animals are important dogs and stray dogs somebody need to take care of them and humans बच्चे कई ऐसे इंसिडेंट हुए you know kids have passed away by dog bite and this and that तो what according to Dr. Manjari philosopher इसका एक because you are you know आपके ह्यूमन एंगल भी बताएं and you are also animal lover आपके हिसाब से इसका क्या रेमेडी होना चाहिए कि इंडिया में you know it is all happy situation for them and ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एक बात मैं बोलना चाहूँगी जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली डॉग बाइट इंसिडेंट्स इतने सारे लोग रिपोर्ट करते हैं आई विश वो एक डॉग का इंटरव्यू ले पाते और वो बता पाता कि ऐसा क्या हुआ क्यों उसने किसी इंसान को बाइट किया बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस आई हैव एक्सपीरियंस स्ट्रे डॉग्स ऑल माई लाइफ दे डोंट बाइट अनप्रोवोक्ड होते हैं. There are rare incidences where they bite unprovoked, but 99% of the stray dogs don't bite unless they are biting in self-defense. उनको तकलीफ दी जा रही होती है कोई तो रीज़न होता है या कभी कोई इंसान को मारने को जाता है तो दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देमसेल्व्स तो उसमें काट लिया तो वो पहले की स्टोरी नहीं दिखाते हैं अनफॉर्चुनेटली जब रिपोर्टिंग होती है. सो आई फील वेरी बैड अबाउट दैट्स नंबर वन. Also because you have to understand stray dogs depend a lot on human beings, so they depend on the human beings for food, especially food and love, so they will not try to
फालतू में go and bite. Otherwise, they will not get food from the people who are going to be, responsible for taking care of them. Then, okay, so solution आप पूछ रहे थे, तो मैं I would say बहुत सिंपल solution है, जो कि गवर्नमेंट में है, लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, which is you have to vaccinate and neuter the dogs, number one. And if you actually spend the money which is allotted for vaccinating and neutering the dogs, it's very easy to get all the dogs and all neutered and vaccinated, and they become safer like that. They're not aggressive. I mean, most of them are actually not aggressive. There are few dogs who are aggressive, but that gets taken care of the moment they're vaccinated and neutered. So yeah, that's one very important thing. And also, over generations, their numbers will come down if they're all vaccinated and neutered, right? Right. That's one thing. Education of people, how to handle stray dogs, how to, if you understand very basic dog behavior, very basic local animals behavior, which is now rocket science. कोई भी like क्यों एक बाइक के पीछे भाग रहा है, या how do you handle a situation like that? Because the dogs that run behind the bike, they're actually not going to bite you. The moment you slow down the bike, they will stop and they'll go back. So there are little things, this little behavioral understandings which if everybody has, it'll be easier for them to deal with them on a day-to-day basis if they are scared or whatever. I feel बचपन से जो conditioning होती है वो बहुत important है. कभी-कभी बच्चे बहुत परेशान करते हैं dogs को. So parents have to teach kindness, compassion and manners to the children when it comes to dealing with animals on the road. उनकी जाके पूंछ ना पकड़े या उनको जाके फालतू में like they don't try to trouble them or something. So I think that basic education of how to deal with stray dogs and to understand dog behavior, I think it's very important. Also, I really feel if actually इतने सारे schools हैं इंडिया में, इतने सारे institutions हैं, educational institutions हैं इंडिया में, and इतने बड़े-बड़े campuses हैं. In fact, if they can all adopt a number of stray dogs, if every building can adopt 2 stray dogs or whatever, so एक तो सबको घर मिल जाएगा, they'll all get taken care of. At the same time, they give so much protection. I remember मैं अपने college में गई थी, I did my junior college from Ferguson in Pune. Recently एक shoot के लिए गई थी मैं, and I suddenly noticed a different scenario out there कि वहाँ पे इतने सारे stray dogs घूम रहे हैं and सारे बच्चे उनको प्यार कर रहे हैं, वो जाके classrooms में बैठ रहे हैं, they're getting fed, they're well taken care of. It's such a beautiful culture, and I think animals teach so much compassion and they teach about kindness and about coexistence, of different species together. So agar schools mein, colleges mein, institutions mein, even in, like in companies and all, if they start adopting, I think first of all, children in schools will learn how to deal with animals. It can be a part of the curriculum to actually coexist with all the these feel things. of compassion as well. To bring the feel of compassion. Like imagine we'll be raising a generation of such kind and compassionate children and human beings in future. Apart from that, I think one very important thing which is already happening is with the help of the government, if the Indian Army, Indian police. About to say that, and I was surprised because only day before I read it in Times of India that is being implemented, Yes. and Prime Minister said it actually. I was so happy to hear that. That is amazing, and that was the first person who said that. I was so happy to see that because our Indian dogs are so intelligent. If you train them from childhood especially, even if they're a little older, they are so intelligent. They grasp every instruction so beautifully. So I don't know why they're discriminated against as compared to the foreign breeds. They are as intelligent, as smart, and they can be an asset to the, Well, I'm sure very soon I think we can see that. So thank you for answering this sensitive issue, Dr. Manjari Menka Fadnis. Okay, now Kavin, I really appreciate that what you do because सबके बस की बात नहीं है. Okay, अब हम देखते हैं कि हमारे बस की क्या है. Where I'm good in, I'm an astrologer. Yes. And I have your horoscope in front of me and I know who you are. So सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि no He matter knows who I am.
यू नो एक कॉम्प्लीमेंट, जब आप बॉर्न हुए थे अगर मुझसे कोई पूछता ये बच्ची बड़ी कब होगी, हुई अभी तक बड़ी। तो मैं कहता है बच्ची नहीं है, Oh. because your maturity, the way you, because your Jupiter is retrograde, that's why technically I'm telling you. So they are the one who keep on learning. तो आपने जितने भी एग्जाम्पल अभी दिए कि भाई इंतजार में मैंने कहा कि सुबह से शाम हो गई, तो आपने क्या कहा, बोले कि मैंने अपनी सुबह कर ली, यू स्टार्टेड एक्टिंग इन डिफरेंट मूवीज, स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक, दिस एंड दैट, तो बिकॉज यू विल नेवर एवर स्टॉप लर्निंग, दैट इज योर रेट्रोग्रेड जुपिटर, दैट्स अमेजिंग. और अगर मैं आपसे कहूँगा कि बच्ची ऐसा नहीं करते, तो आपका आंसर होगा लेट मी डू इट माई वे. So your own approach, your revolutionary approach, that is how you are. You tend to do things differently. फिर ये क्या है, कौन है, क्या करेगी, तो मैं कहता ये देखिए ये बच्ची जो है ये पहले बोलने से पहले गाना गाना सीख जाएगी और चलने से पहले डांस करना सीख जाएगी, बिकॉज यू हैव ए वीनस ऑन द ascendant and that makes a person amazingly beautiful, which you are. Thank you. And secondly Venus and it is with Mercury, that means जैसे मैं बहुत अच्छा अमेजिंग में गाना गाता हूँ बट मैं बाथरूम में गाता हूँ, बट फॉर यू इट इज इंटेलेक्ट, यू नो एनी टैलेंट शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू बी अपलॉडेड. तो Mercury Venus is intelligent creativity which you have been imbibed with because it's together on your ascendant. Wow. And और जब भी जैसे जब हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं या कुंडली बनने की कोशिश होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, जो भी है, तो मैं जैसे देखता हूँ आपकी आईब्रोज देखी मैं समझ गया कि इससे पंगा नहीं ले सकते, बिकॉज शी यू नो आई नो व्हाट यू आर सेइंग, आई नो व्हाट यू मेंट, तो यू रीड बिटवीन द लाइंस. तो ये आपका गुड भी है बैड भी है, क्योंकि उतनी जल्दी से एक्सेप्टेंस होता नहीं है. और जो कहानी सुनाता है, जैसे आपने कहा कि देयर आर फ्यू पीपल यू नो हु आर बैड एंड यू नो इट, यू नो कि ये कह ये रहा है एंड ही मीन समथिंग, सो ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. और जो मैंने कहा था कि इधर यू कैन बी इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल, यू आर बोथ, इज बिकॉज ऑफ योर थैंक्स टू योर आईब्रोज, एंड आईब्रोज का मतलब हुआ योर मर्करी ऑन योर असेंडेंट, बिकॉज ऑफ दैट यू नो आपका ये शेप और ये डेंसिटी ऑफ द आईब्रोज का बना. एंड वीनस इज योर आइज, इसीलिए कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट. तो आइज को लव एट फर्स्ट साइट क्यों बोला गया, ईयर्स और नोज क्यों नहीं बोला गया, बिकॉज आइज रूल्स योर वीनस, so that's the reason you have an amazing set of eyes. And then your emotions. So इतना आपने अभी तक इतना यू नो लंबे लंबे आंसर दिए हैं. अभी तक हमने पीछे पॉडकास्ट किए तो एक लाइन 2 लाइन के आंसर देते थे लोग, एंड आपने पूरा पैराग्राफ दिया. मेरी भी आदत है अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ. बट नो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बट यू आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव. आप हर चीज़ को शिद्दत से करते हो, आप उसको, दो यू आर एन एक्टर, बट मुझे लगता है कि आप एक्टिंग नहीं करते, आप दिल से करते हो. एंड और ये हमेशा कहा जाता है जो आप इंसान दिल से करता है वो दिल पे ज़रूर लगती है, बट दैट इज़ ऑल्सो लगती है आपको भी, कि शीशा टूटता है तो आवाज़ आती है, हम इतने टूट चुके हैं कि आवाज़ ही नहीं आती. तो मैंने रिलेशनशिप का पूछा था वो लगी. तो मैंने रिलेशनशिप का पूछा था, तो आपने कहा था कि हाँ यू नो आई एम डन. तो वो एक आपका यू नो वो आपका जो इमोशन है वो बहुत डीप रूटेड है. और एक और आपका जो गुड साइड है जिस पीपल शुड बी अवेयर ऑफ इज़ योर इंस्टिंक्ट्स, योर गट फील, योर इंट्यूशन. तो मैं क्या कह रहा हूँ और मैं वाकई में क्या कहना चाहता हूँ, एक तो इंटेलेक्ट हुआ, बट यू आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. तो ये आपका एक, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड विद दैट, एंड दैट्स वन ऑफ द. I have just recently learned to trust my instincts more and more strongly. तो मेरे ख्याल से आपका एक तो आपकी पढ़ाई बंद नहीं होगी, सीखना बंद नहीं होगा, ऑन वेरियस फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी यू विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, नॉट ओनली एक्टिंग बट अदर साइड ऑल्सो. तो मे बी बड़े होके आप डायरेक्टर बनेंगे. Okay. Music. I like that. Music is something which will come to you, you know, and एक मैं prediction आपके लिए करना चाहता हूँ. एक तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेडी फेस तो है मंजरी, डॉक्टर, फिलोसोफर, बट यू आर ऑल्सो ए नो नॉनसेंस पर्सन, यू नो. तो आपको प्रोवोक करने का काम एक्चुअली कुछ सेकंड्स का है. तो अभी तो कैमरे के सामने आपने बहुत सारी बातें मेरी सुन ली, बट इट इज़ नॉट ईजी अदरवाइज, यू नो, बिकॉज अगर कोई ठीक से आपसे बात नहीं कर रहा है, इज नॉट यूजिंग द राइट सेट ऑफ वर्ड्स और टोन, यू फील ऑफेंडेड, because for you, you know, that is how it is. But other good thing about you is you may remember me next year. आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है. So your one era is going to end and another era, beautiful era will begin, which will rule you for 6 years. Beautiful era, no? Absolutely, that is how I said, because आपके वो expression मुझे देखते ही से मैं डर गया. हाँ, तो वो beautiful है आपकी तरह. Because planet sun will be ruling you, which is the lord of your finance, family, and sun is all बनना है तो सूरज वन सितारों में क्या रखा है, तो it is all about recognition. और बिकॉज उसका एसोसिएशन ओवरसीज से है, तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इधर यू विल ट्राई टू यू नो टाई अप विद सम आई डोंट नो मल्टीनेशनल और आई डोंट नो, यू नो, कुछ तो आप प्लान करोगे और वो आपका एक नया रास्ता, एक नई खिड़की, एक नया दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अनदर एरा ऑफ योर लाइफ. सो मेरे ख्याल से देखिए सबसे पहले यू नो उम्र के साथ साथ यू टेंड टू ग्रो ओल्ड. जैसे आई एम हाइडिंग माई 20 years, यू कैन ईजिली हाइड योर 15, यू नो.
सो एज का कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है. तो यू आर ब्लेस्ड विद दैट बिकॉज ऑफ वीनस ऑन योर यू नो दैट इज हाउ यू आर. सो आई थिंक इट इज क्वाइट अ ब्यूटीफुल हॉरोस्कोप. थोड़ा सा रेस्टलेसनेस जरूर आपको होता है. यू हैव ए टेंडेंसी टू बिकम रेस्टलेस. Absolutely. दिस वन वीक साइड. तो उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन विच यू सेड दैट यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड दैट्स द बेस्ट थिंग हैपन टू यू बिकॉज यू एक आपकी प्रॉब्लम और है, बहुत बड़ी वीकनेस है आपकी टू फॉलो आइडियलिज्म. और उसको मैं वीकनेस कह रहा हूँ बिकॉज इन कलयुग मैं कहता हूँ कि इन कलयुग इन रोम बिकम लाइक रोमन्स. तो थोड़ा सा टैक्ट, थोड़ा सा डिप्लोमेसी, थोड़ा सा लेट गो, वो उतना आसान नहीं है आपके लिए. इफ़ यू फील दिस नॉट राइट यू डोंट डू इट. तो यहाँ पे मेरा एक वर्ड ऑफ एडवाइस है एज एस्ट्रोलॉजर, एज योर वेल विशर फ्रेंड, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लीजिए. डोंट ट्राई टू चेंज दिस वर्ल्ड बिकॉज यू कांट डू दैट. नोबडी. इट इज़ अबाउट मोर अबाउट एक्सेप्टेंस. सो आई नो यू आर वाई, मैं यहाँ पे ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, बट जस्ट टू यू नो यहाँ पे एक ट्विस्ट करने की बात कर रहा हूँ. बाकी इट इज़ ऑल अमेजिंग एंड आई थिंक यू विल कीप डूइंग गुड एंड रिटायरमेंट होगा नहीं, कंप्लेसेंट होगी नहीं, और सेटबैक यू नो क्या होता है यू डोंट नो बिकॉज यू हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग नाउ यू नो बिकॉज ऑफ योर हॉरोस्कोप. बिकॉज जब आप बड़े होते हैं तो आप सैटर्न बन जाते हैं, आप गुरु बन जाते हैं, योर नॉलेज ग्रोज, योर एक्सपीरियंस मेक यू मोर वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर. वो सैटर्न की बात कर रहा था एंड सैटर्न इज एक्सॉल्टेड इन योर हॉरोस्कोप. What is exalted? Sorry. सैटर्न जिससे दुनिया डरती है, शनि. तो इसलिए आपका वाइट, रेड, ऑरेंज, येलो, इवन ये आपके फेवरेट कलर्स हैं यू नो. Yes. एंड ब्लू से भी आपको कोई शिकायत नहीं है. I like blue. और कोई ना कोई आपके नाम कभी कुछ करके चला जाएगा. मतलब यू मे गेट समथिंग इन इनहेरिटेंस. व्हाट आई एम सेइंग इज लॉट Oh, ऑफ like प्रॉपर्टी, that. या अनएक्सपेक्टेड मनी और प्रॉपर्टीज इन लोड्स यू मे गेट इट. तो हो सकता है कि ये पॉडकास्ट देख के somebody में यू नो Bring it on. fall in love with you. You never know. So you are blessed. वैसे भी वीनस जब ये साइन में होता है, the person is blessed to get the best. तो beautiful things will keep coming to you. I think you should be grateful. And because आपके वो compassion वाली साइड हैं, animal lover हो, social cause की बात करते हो, तो all your goodness it always come back. मेरा ये believe है, whatever goes around comes around. So I think you keep spreading it, and that's the reason you are doing it because you are ruled by moon. Moon is all about emotion. तो मंजरी कौन बोले यार, इमोशन. तो सारी कहानी आपकी ज़िंदगी की जो है वो इमोशन की है. तो इमोशन को धीरे धीरे अपने अपने टूटे हुए दिल को यू नो जोड़ते जोड़ते यू नो उसको इतना स्ट्रांग बना लिया है कि नाउ वो इमोशनल मंजरी हैज़ बिकम ए वाइजर मंजरी अकॉर्डिंग टू मी. तो दैट इज़ हाउ इट विल टेक यू फर्दर. बट अगला साल मेरी भाषा में मैं कहता हूँ ये वो टाइम है जिसमें मकान और दुकान सब बदल जाएगा. दैट मीन्स गोइंग टू बी अनदर जर्नी ऑफ योर लाइफ, बट इट विल बी वेरी गुड. सो ओवरसीज़ में क्या होगा मुझे पता नहीं, और मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड हैं, और क्या क्या करने वाले हो आप म्यूजिक इसमें, अपने एक्टिंग में या म्यूजिक में या डायरेक्शन में, आई डोंट नो, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा. एंड कैन यू रिलेट टू, सॉरी About our direction बोल रहे हैं, is it something like that? ऑफ कोर्स यस. देखो एक्टिंग, पेंटिंग, फैशन, म्यूजिक, anything to do with creativity is always imbibed in you. Yes. And because your Jupiter is so strong, और जो आपने कहा था कि वो रॉन्ग पॉप था, आप समझाते रहे, वो समझा नहीं यू नो, और वो होता रहा. तो वो आपके अंदर एक है माइंड सेट, एंड यू आर इंट्यूटिव ऑल्सो टू बिकम ए डायरेक्टर. सो यू नेवर नो, मे बी बड़े हो गए यू विल स्टार्ट directing movies and maybe you know try to do something, or maybe writing because Mercury है तो your mind is always active. Yeah. आप सो रहे हैं कि सोच रहे हैं कि सोते सोते सोच रहे हैं, you are always thinking actually. So you must analyze and start writing. Thank you for telling me that. I have been wanting to do that, but okay, yeah. Wow. I will. That's amazing. So I think creative, मुझे नहीं पता how much you can relate to whatever I have told you. I do relate to everything that you said. Okay. So where are you heading to? अगर मैं इतने शिद्दत से बार बार बोल रहा हूँ कि सब बदल जाएगा, तुम बदल जाओगे, यू नो बदलना ही इंसान की फितरत है, अगर तुम ना बदलते तो दुनिया बदल जाती. तो क्या बदलने वाला है, क्या दुनिया बदल रही है? वो तो नो आर यू थिंकिंग कहीं दूर, कहीं कहीं तो ये जब दिन ढल जाए, मतलब कुछ तो लग रहा है आपको, कुछ चेंज होने वाला है, बिकॉज एक एरा एंड हो रहा है, और 20 years of era is ending. I don't know, वो तो टाइम ही बताएगा, but yes, one thing I'm working towards in my life. So music had taken a back seat since so many years. तो इनफैक्ट जो मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो जर्नी शुरू की थी वो एक्चुअली एज अ सिंगर की थी इन चैनल वी पॉप स्टार्स 2. Oh my God, I was not aware. तो मेरी ये रिसर्च में मिस हो गया actually. So I was a finalist at Channel V Pop But Stars I 2. said it ना कि गाते गाते पैदा हुए थे आप, या हाँ, बोलने तो- से पहले गाना सीख लिया. Okay. Yeah, that's right, because I was 3 years old when I was thrown on stage and I would sing and dance and everything. sing. That was, yeah, so all that was a part of my life. But anyway, after I reached till the finals in Channel V Pop Stars 2, but I didn't make it to the band. And तो उसके बाद मैं एक्टिंग शुरू कर दी थी, and then that took a back seat.
But I kept learning singing, and I have a very beautiful, very wonderful guru called Suchita Bhattacharya ji. उनसे मैं Indian classical सीख रही हूँ कुछ सालों से. And so I don't know, music is coming back very strongly in my life, and I've realized कि मैं acting is a lot about waiting. You know, it's a waiting game where you're waiting for the right projects once they start, when you're waiting for the to release. So अभी मैं जैसे, for example, I'm waiting for some of my films to release. Yeah. So meanwhile, I've decided I'm no longer going to wait for my next work to release. I'm going to focus my energies on music, and I'm preparing to get into live music, live singing, and also create some Live singing. Yeah, like create some singles, and I've written and composed a song which I'm working on right now, and there are other few songs. So I'll keep releasing music meanwhile while I'm waiting for the acting Manjari too. stuff. Parallelly, like everything will happen parallelly, like acting and singing now. Oh. तो आपको लगता है कि आपकी सक्सेस के पीछे कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, कोई ऐसा अनसीन फोर्स है जो आपको गिरने नहीं देता है, एंड बार बार आप समझ जाती हैं बिकॉज इतना वेट और इतना कहाँ से शुरू हुआ आपका करियर, और स्टिल एंड यू आर ग्रोइंग एंड ग्लोइंग. तो ये डिविनिटी के साथ बिना नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जो हमने बात की थी कि इतना वेटिंग गेम है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं कि अब हमसे ना हो पाएगा, बट स्टिल यू आर हैप्पी. और मैंने कहा कि वो इज मंजरी, जो मैंने कहा कि जो मुस्कुरा रहा है वही मंजरी है. तो आपको लगता है कि देयर इज सम एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हैंड ऑफ गॉड और सम डिविनिटी विद यू अराउंड यू? I do believe that. I do believe I'm very protected, and like if I didn't believe I will be protected, मैं शायद ये step ही नहीं लेती इंडस्ट्री में आने का, because मैंने एक बुक पढ़ी थी before I came to the industry, because मैं बॉम्बे में किसी को भी नहीं जानती थी. I did not know मैं what is going to happen, how will I make it, किससे मिलूंगी, मैं एक इंसान को बॉम्बे में नहीं जानती थी. So I had read this very beautiful book called Alchemist by Paulo Coelho, जिसमें एक बहुत प्यारी लाइन है that when you truly want something deeply in life, the whole universe conspires to help you get it. शाहरुख खान ने उसका डायलॉग बोल दिया था. हाँ, वो उन्हें बाद में बोला है, पहले पॉलो कोएलो की बुक आई थी. किसी भी चीज को शिद्दत से. हाँ, वो फिल्म बहुत बाद में आई Yeah, I know, I know, I know. But वो लाइन मैंने पढ़ी थी, and I kind of was like, okay, this is what I really want to do in my life. I want to be in the entertainment industry. अभी मैं अगर अपना एक स्टेप लूंगी, तो the universe will show me every other step that I need to take. And I'm so glad I did. And वो दिन है और आज का दिन है. आपने बोला 20 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में. जी. ऊपर like उतार चढ़ाव आए हैं, but I have always been blessed and protected, and बॉम्बे ने मुझे वापस जाने नहीं दिया क्या बात, आज तक. क्या बात. So I'm very grateful for that. And you have accepted everyone and everything around. Yeah, I mean, like, see, some things you can't change. Some things are very beautiful. So I live in a very passionate industry. So as I keep saying all the time, industry में लोग बहुत अच्छे हैं. Some are bad, but not all. And I have been blessed that I have met some of the most amazing people in the industry. So That is what we call blessing. yeah. So मतलब ये सारी बातें अगर आप 2 लाइन में कहती तो ऐसे कहती कि गुजर रही है जिंदगी इस अनजान शहर में अपनी, अब तो आदत सी हो गई है अजनबियों की. So you got accustomed and made everyone as your family, friends and everything. Amazing. Great. तो पर अभी भी डॉक्टर मंजरी कुछ ऐसा लगता है जो उसे अचीव नहीं किया? बहुत कुछ. I honestly बोलूँ, एकदम honestly बोलूँ तो मुझे आज भी लगता है कि मैं एक बंद मुट्ठी हूँ. I feel like this volcano waiting to explode. I don't think the industry has even seen 5% of my potential as an actor and as a creative person. So, and I really want that they do see it. I hope I get those opportunities. By I'm the grace of working God, towards it. जैसे मैंने कहा सब बदल जाएगा. एंड ये पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं बोलूँगा एज ए एस्ट्रोलॉजर कि भैया पैसा लगा दो. इफ़ यू रियली वांट कि आपकी मूवी चलनी चाहिए तो उसमें मंजरी होनी चाहिए. वाह. सुन लो सब लोग, सुन लो. तो आज के इस फास्ट पेस जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें हाउ टू मेक योर सेल्फ किकिंग अलाइव, हैप्पी एंड फुल ऑफ ब्लिस. डू यू डू सम मेडिटेशन या कुछ आपका रिचुअल्स हैं या कुछ चैंटिंग करती हैं आप? जी हाँ. So I have been
doing a lot of Buddhist chants, like there's Namyoho Renge Yeah. Kyo, and it's a very powerful Lotus Sutra, and I do that morning and evening every day. And so yeah, I do the chantings, and I have seen a lot of difference in my life. There's a lot of alignment and clarity of thought and what I needed to. I mean, like when I went into that phase where I was looking for answers and I was looking for, I was introspecting about my life and my journey and what I did do right, what I didn't do right, what I can change about myself to grow. So when I was doing all those introspections in life, so somehow chanting really helped my mind to align, for me to get answers from within. I do believe in guardian angels, and that I've been believing right since the time I have entered this industry. I do believe every human being is born with, whether they believe in it or not, they're all born with guardian angels around them. They're never alone, and they're always listening. They don't have the right to interfere in your life, but when you ask for help, they help and they listen. And therefore, I've always felt very protected in my life. So मैं कोई भी step लेने से पहले मैं डरती नहीं हूँ. मुझे पता है I'll be taken care of. एक तो मेरे parents are very angels, of course. Yeah. And then I have my guardian angels. So yeah. No, it's all about belief actually. You know, आपका belief कैसा भी है, belief तो होना चाहिए. When you know, जैसे management में कहते हैं, you know, a good manager is one who let others do all the job. Yeah. जिंदगी की management कहती है, give your best and leave him the rest. Yes. तो आपकी जिंदगी में अगर him missing है, where you're not trusting anyone and you're blaming or claiming all by yourself, then you will be in soup. Yes. तो ये तो बहुत अच्छी बात है, and I think this is amazing. But do you follow any spiritual guru? जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, art of living है, या people follow Bhagavad Gita and this and that. So have you gone through that or? I'm a big believer of Sai Baba, Shirdi Sai Baba. Okay. So yeah. Yeah. So again, belief, you know. Yeah. आपके लिए spirituality का मतलब क्या है? Following rituals, silence, सेवा, या फिर जो किसी से नहीं होता, self awareness? Rituals, so definitely not. I'm not a ritual person. I think the most beautiful prayer anyone can do, the most beautiful spirituality is being grateful in life, is what I believe. Like, you know, I mean, I believe in the universe, where the universe is so abundant that it's there's abundance to give every single person living on this planet. But kya hota hai, through life, we start getting like ungrateful and cribby. So the flow of the abundance in your life gets clogged because of ungratefulness. So I think the moment you kind of start thanking, Gratitude. yeah, universe, for the small little things that exist in your life, I think that opens a lot of doors. I think gratefulness is one of the most beautiful spiritual practices. Kindness is one of the most beautiful spiritual practices. Humanity is one of the most beautiful spiritual practices. And that's what spirituality is. Nothing more, nothing less. Amazing. तो क्या do you get some signs also universe से कि कोई सपना या कभी कोई coincidence या people see numbers और ये number मुझे दिख गए कि आपको जो guide करता है कि ये होने वाला है या some? हर वक्त I keep getting signs everywhere. Also because I think everyone will get signs if they open their mind to it, and a lot of people do. I still remember मैं जब अपना पहला audition देके गई थी बॉम्बे में, मैं पूना में रहती थी, तो I would do up and down through the Volvo bus and all that. अरे तभी आपने वो पुणे हाईवे किया था. नहीं, वो भी. But so I remember मैं जब वो audition देके आ रही थी, मुझे पता नहीं था मुझे फिल्म मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है. And I remember just मेरी आंखें एक billboard पे गई, and it said something, exactly याद नहीं है words, but something to the effect of ready to move to your dreamland or something. I think वो कुछ real estate का कुछ ad था या कुछ जो भी था. I don't remember क्या अपना था. सपना साकार कीजिए, ऐसा something like that हिंदी में. Like हाँ, something like Fulfill your dreams. like get ready to move to your dreamland. Okay, to your dream house, something like that. Dreamland. So Dreamland. that's Mumbai. Mumbai was like the place of my like my work, where work was calling me. So that happened. Then there was like, you know, when I was going through this whole place of stagnancy, कि क्या हो रहा है, then there was something I saw called little by little, day by day, what is meant for you will find its way. Amazing. This is I so get beautiful. goosebumps when I hear that. This is so beautiful. Yeah.
So these kind of things keep happening. Then there was one more time when I was इसी kind पे of वो गाना बनाया था उन्होंने शायद, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मतलब सक्सेस। अभी बहुत बहुत स्लो गया अभी, प्लीज पिक अप पेस ना, कम ऑन पिक अप पेस। आने वाला। So yeah, that then there was this coincidence। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। I was इत्तेफाक। I don't believe in coincidences, but 2009 की बात है। जानते हो जाना रिलीज हो चुकी थी 8 में, 9 में जब अवार्ड सीजन शुरू हो रहा था, एक कोई वन अवार्ड फंक्शन वाज अनाउंसिंग देयर नॉमिनीज, एंड उसमें मेरा नाम नहीं था। And I was shooting in Hyderabad, and I felt I was feeling very low. I was like feeling very bad about it. That like, you know, I was hoping to be nominated somewhere in, you know. But उसी के 2 दिन बाद Stardust Awards के nominations announce हुए थे, and I saw my name nominated in Best New Heroine in a Supporting Role, the Breakthrough Performance Female. And I was very happy. I was like so excited, and I was like, whoa, like God, show me a sign, you know, like whatever. So now a little backstory, that I love collecting angel figurines. तो मेरे घर में आप अगर देखेंगे कभी तो I have a lot of बुलाया नहीं आपने एक्चुअली। very soon. So I have all my showpieces are angel figurines in my house. So Tresori, there's one shop where I used to love buying all these things from, and तो suddenly मुझे उसी दिन वहाँ से कॉल आता है कि मैम you had liked one angel candle stand, and it was not available when you had come. I mean, like, you know, you'd liked it, but you wanted to, they were not, something like that, कि it's available now, आ गया है वापस, you can come and take it. So I found it very strange that एक तो पहली बात, अगर मुझे कुछ पसंद आया था तो ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं लिया। मुझे ऐसा कुछ याद ही नहीं आया कि I liked something, I didn't get it. But so I was like, ठीक है, I'll come back and I'll check it out. So जब मैं गई, when I went to Mumbai back again, I went to the shop, and they showed me the candle stands. They looked like awards. What? There were 2. It was a pair. They looked like awards with the black podium and the gold body of an angel holding something like this. Yeah, of course. Okay. Like holding a candle, whatever thing. So I was like, okay, this is a sign, huh? A month later was the Cut award. to, there's a हाँ, cut to. Cut to. Sorry. A month later was the award function, and I won Breakthrough Performance Female, that same award I was nominated for. Happy as crazy. And then I went back home, and then later when I saw the telecast of the show, it didn't strike me till then, but Farhan Akhtar was holding his award that year for Rock On, and like he was saying, "Oh, I'm so happy to get this angel," and I was like, "Angel!" And then I went and I noticed my the candle stands. If I actually keep the candle stand straight, like normally it's like this, right? Yeah, Like yeah. the wings are like that and like that. And the award, the Stardust Award, was a flattened version of the front profile of exactly that candle stand. Amazing. So, so this is one of my favorite stories when it comes to coincidences. So yeah. No, I completely believe in it. You know, ittifaq, coincidences never exist. There is always a reason. And I believe in it. Yeah. So I can relate to that. तो गीता का नाम मतलब यू बिलीव, जैसे हम बात करते हैं गीता, उसमें कहते हैं कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो ये आपका कैसा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, या आपकी कुछ अपनी कुछ खुद की फिलॉसफी है, या आपके डिसीजन में वो आप जरूर उसको इम्प्लीमेंट करती हैं? No, I do believe in karma, of course. I think that's a very important part of our Indian belief system. And I totally believe in that. Like, जो जैसे करोगे वैसे भरोगे. So, yeah. But I don't base everything I do on. मतलब I'm not दूध की धुली हुई. Like I do things which एक्सपेक्टेशन से नहीं कर रहे हैं आप, यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज़ like I'm doing it because I want to do something. So I would do that. Like if I have a chocolate cake with me, I will not share it with my friend, even if that's bad karma. I will not want to share it with anybody. So yeah, I don't live my life according to. तो आपके फ्रेंड्स को पता चल गया होगा कि 2 लेके आने हैं। नहीं भाई, मेरे साथ कोई चॉकलेट और केक शेयर नहीं कर सकता, वो पूरा मैं खाऊंगी। हाउ स्वीट, लिटरली। ऑल राइट,
अच्छा, तो ये बताइए, हंसी मुस्कुराती खिलखिलाती मंजरी, डॉक्टर मंजरी, मेनका मंजरी, फिलोसोफर मंजरी, बट हु इज रियल मंजरी एट कोर? आप बताओ, आपने तो मेरा हॉरोस्कोप देख लिया है। एक्चुअली इट इज़ मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसिटेड, बट मुझे लगता है कि कोर मतलब आंसर आपको देना था और मुझे आपने माइक दे दिया। देखिए, देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन फॉलो आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स इन देयर लाइफ। उसूल पे कोई नहीं चलता। उसने भी डांट दिया था जब बच्चन साहब को बोला था तेरे उसूल तेरे आदर्श, तुम कहाँ रह गए, मैं खामोश गया। तो वो तो कब से चला रहा है, कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास कहाँ है? तो मतलब फिर माँ कहाँ है, ये सोच आया था शायद। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, माँ मतलब इमोशन, माँ मतलब मन, माँ मतलब मून, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर रूल्ड ऑफ। फॉर यू इंटायर इज लाइफ इज ऑल अबाउट इमोशन। आप दिल के हिसाब से, जैसे बाबूजी ने कहा था, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, बिल्कुल गलत कहा था। फॉर यू इट इज़ ऑल अबाउट योर मन। तो मन के हिसाब से जब होता है तो यू आर अमेजिंगली हैप्पी। बट जो मैं कह रहा था, आई विल कम बैक टू दैट वाइज विजडम एंड लुक्स मोस्टली दे डोंट गो हैंड इन हैंड, and the philosophy of following your principles is something you are definitely। और मैं आपकी पढ़ाई बंद होने वाली नहीं है। और मैं बार बार आपको मजाक में डॉक्टर कह रहा था, मुझे लगता है कि आप पीएचडी करके ही रहोगे। यू वांट टू गिव अप इजीली। बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल साइड ऑफ इट, आपको क्या लगता है हु यू रियली आर? मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती। अरे ऑफ कोर्स, यू सी इफ यू आर गुड यू शुड से दैट। मैं भी तो कर रहा था। So, I like to believe I am a kind, compassionate person. Uh, yeah, I mean, बस। मून काइंड ऑफ केयर, वही इमोशन की दुकान। तो ये बताइए कि पेन ने आपको क्या सिखाया? मून की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपकी सक्सेस ने आपको नहीं सिखाया। पेन ने क्या सिखाया है? देखिए, सक्सेस बहुत रिलेटिव है। Yeah. हम बात कर रहे थे दीपिका पादुकोण, यू कांट कंपेयर ए और विद बी, इट इज सबकी जिंदगी अलग है। कौन कितनी बार पैदा हुआ था, आया प्रारब्ध हम कहते हैं, बट यू आर समबडी। ऐसा नहीं है कि लोग आपको नहीं जानते, एवरीवन नोज यू। इतनी आपकी फैन फॉलोइंग है, इंक्लूडिंग मी। सो दिस इज अमेजिंग। तो ये यू आर सक्सेसफुल। तो आपको पेन ने सिखाया है जो सक्सेस ने नहीं सिखाया? Is patience, because it everything like phases out. Like pain does not stay, happiness does not stay, success does not stay. It's all a bubble. So it's like nothing is permanent, neither success nor failure nor pain nor joy. But that's the beauty of life, no? चलिए, तो यही मोनोटोनस जो हमारा चल रहा है, इतने सारे सवाल और उसके डीप वाले डॉक्टर के जवाब, हम कुछ फन करते हैं। हमने आई विल आस्क यू वन लाइनर एंड यू हैव टू रिप्लाई इन वन वर्ड और टू। Okay. कि वो ऐसा कौन सा को स्टार है जिससे आप फिर से काम करना चाहती हैं, या नहीं भी किया है आप उसके साथ करना चाहती हैं? फिर से काम करना चाहिए। I would love to work with Imran Khan again. और ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको लगता था कि यार मुझे कर लेनी चाहिए थी? मुगले आजम। वाह, नारकली। उसमें पैदा नहीं हुई थी, लेकिन नहीं, but you could have done that. would love to have Wow, done of that. course, Would love to amazing. play Anarkali. What a role that was. सो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है, कॉमेडी और इमोशनल? बिकॉज इमोशनल में आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, दैट आई नो। So I think comedy is more challenging, but I really enjoy comedy. I really would. I think I'll have fun with it. It'll be good. I'll do good in that. विच इज़ बेटर, साउथ और बॉलीवुड? चलो कंपेयर मत करो, ठीक है। खाना बता दो जहाँ खाना ज़्यादा अच्छा मिलता है सेट पे। But otherwise, I like the dosas and the idlis. I love South Indian food, but I just wish they made less spicy food. आग लगा देते हैं। अर्ली राइजर और नाइट आउल? Early riser. वाह। I prefer to wake up early. If I can. बट ये तो इंडस्ट्री में तो मतलब सारे काम यहाँ पे रात में होते हैं, क्योंकि ये सितारे तो चमकते हैं रात में। मैंने देखा है स्टोरी टेलिंग रात में होती है, इतने सेट रात को ही शूट करेंगे। अभी सर सो रहे हैं दिन में। Not everybody. Like, Akshay Kumar wakes up at like 4 हाँ, o'clock in the morning. बहुत ही He's very disciplined about his life. I mean, I love waking up. See, I'm not claiming that I wake up every day at 6 o'clock, but I have done lots of months where I wake up early in the morning. I'm very motivated. So what time do you I get up? love getting up early. What time? 7 o'clock I wake up without alarm. ग्रेट। तो माउंटेन और बीचेस? Beaches and mountain and beaches. I'm a nature person. Like, I love nature. मुझे ऐसे पूछना चाहिए था, माउंटेन और बीचेस। यू लव बोथ बेसिकली। I love both. I love both. I can't choose, but definitely I need a water body. Like I'm a water scientist. That's the reason you choose in that area where you see Yeah, water. yeah. Amazing. स्ट्रीट फूड और गवर्नमेंट मील? Street food. स्ट्रीट फूड वाली शक्ल तो लग रही थी अभी। Huh?
मतलब अरे कॉम्प्लीमेंट दे रहा था. आई लव स्ट्रीट फूड Okay, ऑल्सो. आई लव दाबेली, कच्ची दाबेली. वन थिंग यू ऑलवेज हैव इन योर हैंड बैग, गन के अलावा. चप्पल. चप्पल. मैं एंजल कह रहा था यार. No, see, all that is obvious. Like, I do carry a little, like, Sai Baba ka photograph and That is what I was everything. expecting. All that is always there. But you carry a चप्पल. I carry a chappal in my bag. मतलब आपको फोबिया है कि आपकी चप्पल टूट जाएगी. नहीं, हाँ. because मैं Mud Island में रहती हूँ. Sometimes like I have to wear heels today. Like I wore heels today, right? पर यहाँ तो बैठ के करना था. हाँ, Nick, but मैं आई तो mud से हूँ ना. So I live in Mud Island. So I have to cross the boat. Yeah. So it's more convenient for me like that. So I carry my shoes with me. Yeah. Your 3 AM friend. My 3 AM friend, Ambar. Amar? Ambar. Okay. Ambar, 3 AM friend, Ambar, my mom. 3 AM friends. Immediately, Mansi's there. So for you, peace is what? Silence or music? Both. I love my silence also. I love my me time. I love my silence. But अगर music background में बज रहा हो तो बात ही कुछ और है. What kind of music? Like गाना अलग है, सीखना है, classical you at all? I love listening to, see, वो mood पे depend करता है. That's completely on the mood. Like the times when I really want to like have fun. So I just love my my like pop music and everything. Or when I'm like in a more ठहरा वाला mood. So I love listening to Ghazal? like not ghazal. Some ghazals I really like. I love a few ghazals like Ranjishi Sahi and like all these like Coke Studio kind of music. I really like listening to that. Or then or Bollywood music, I love Bollywood music. Depends on my mood. But are you a dog lover or a cat lover? ये पूछ रहा था actually. मुझे crocodile ला दो. I love a crocodile also. Or I'm an animal lover. It does not matter dog, cat, mouse, horse. आपको आदमी क्यों नहीं पसंद है? वो कहते हैं ना men are like, मतलब comparison तो हो ही जाता है. Don't insult dogs. नहीं. Heels or sneakers? Heels. I love my sneakers. You'll normally see me in flats all the time. Guilty pleasure food? Guilty pleasure food. Instant noodles. So on a bad day, you cried it out or work out? I cry out. I cry till the time I'm over it and I then get out. अच्छा, last. Describe yourself in hashtag. Hashtag Yeah. magical Manjari. Or hashtag magnetic Manjari. No, magical Manjari sounds better. So yeah, I think today everyone knew your other. No, they have got to know your other side of your personality. Because जैसे कहते हैं कि ये looks जो है ये beautiful है और ये beautiful है तो beautiful है, but you are truly beautiful. You know, आपका जो soul है, और मैंने जो बार बार astrologically आपको कहा था your sun and Jupiter when they are respecting each other, तो principles values की बात कर रहा था. That is something it is not easy to carry in this era. और फिर आपकी इमोशन, फिर आपका कंपैशन, तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ मैसेज टू इट कि नो मैटर इन व्हाट इंडस्ट्री यू आर इन, आप कौन से प्रोफेशन में हैं और वो कितना ग्लैमरस है या फ्लैशी है, बट आई थिंक जो आपका इनर सोल है अगर आप उसको मेंटेन कर पाते हैं, विच यू आर, यू नो, एंड इट्स नॉट लाइक कि अब तो पॉडकास्ट भी खत्म हो चुका है तो आई डोंट नीड टू प्रेज यू, बट व्हाट यू ट्रूली आर is really great. So I think thank you so much for your time. Thank you. And it's completely a great, actually this is not a podcast, it's a lesson that how in spite of all the setbacks आपका इंतज़ार और आपका जो आपने चीज़ें डिस्कवर की, still you are, और आपने वो जवाब नहीं दिया कि आप क्या करने वाली हैं अगले साल, क्योंकि बदलने वाली है दुनिया. तो अब मुझे नहीं पता कि आप हॉलीवुड चले जाओगे या यू विल यू नो कनेक्ट विद समथिंग बिगर एंड बेटर, और बड़े होके तो डायरेक्शन बोल ही रहा था, तो इट कुड बी म्यूजिक, यू नो, तो कुछ तो होने वाला है. तो यही ज़िंदगी है, चलते रहिए. आई थिंक ज़िंदगी तो महज एक दरिया है और बहते चलो यही एक जरिया है. तो थैंक यू सो मच मंजरी. Thank you so much for having me, Sandeep. I had such a good time. गुड लक, गॉड ब्लेस यू, प्लीज कीप स्माइलिंग. Thank you so much. तो ये तो रही थी हमारे साथ मंजरी और उनकी खूब सारी ब्यूटीफुल बातें. मुलाकात होगी आपके साथ फिर से सितारों के सफर में एक और खास मेहमान के साथ.